नमस्कार। आप सबका आज के YouTube लाइव में मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्रावदा नायर हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और नई दिशा में बतौर पेरेंट ट्रेनर काम करती हूँ। थोड़ा सा हम पहले नई दिशा के बारे में जानेंगे। जो अभिभावक हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि नई दिशा ऐसी एक संस्था है जो अभिभावकों के साथ काम करती है, उन अभिभावकों के साथ जिनके बच्चों को विकासात्मक विकलांगताएं हैं, जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह। और हम आपको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक, हम आपको जो एम्पिरिकली वैलिडेटेड या साइंटिफिकली वैलिडेटेड जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप उसको समझ सकें। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ऐसे कई इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भारत के अलग अलग भाषाओं में है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली और तेलुगु। इन भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा एक सर्विस डायरेक्टरी भी है, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि इस क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं अलग अलग शहरों में, उन सबकी जानकारी हम उस सर्विस डायरेक्टरी में देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप आपके शहर में ये ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक स्पीच थेरेपिस्ट है, उदाहरण के तौर पे, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसका सर्च कर सकते हैं और आपको वो जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8448448996, जो सोमवार से शनिवार 9 से 6 काम करता है। और इस हेल्पलाइन पे हम लगभग 7 भाषाएं बोल लेते हैं भारत के, जिसमें हम आपके सवालों का निदान देने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं कि पहली बार मुझे ये पता चला है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मैं बहुत भावुक हुई हूँ, मुझे किसी से बात करनी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। या मुझे अपने बच्चे का यूडीआईडी कार्ड बनवाना है, मैं कैसे बनवाऊं? इस सवाल का भी हम आपको जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। मैं अब 60 साल का हूं, मैं अपने बच्चे का के भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ? ऐसे सवाल भी हमारे पास आते हैं और हम इसका निदान देने की कोशिश करते हैं। तो मैं नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 8448448996। आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नई दिशा ये वाकई में मानती है कि जो अभिभावक हैं वो अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ जितनी जिंदगी बिताते हैं और जितना आपको मालूमात होता है उतना हमको भी नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि ये सारे अभिभावक एक मंच पर आए, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, एडवोकेसी कर सके। और इसके लिए हमने कुछ व्हाट्सएप कम्युनिटीज बना रखे हैं अलग अलग शहरों के। हमारे लगभग 40 व्हाट्सएप कम्युनिटीज हैं, जो अलग अलग शहरों के हैं, अलग अलग निदान के हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। तो आप भी अगर ऐसे कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं जहां लोग आपको समझते हैं, जहां लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जहां आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है और आपको एक सपोर्ट मिलता है और एक खुला कम्युनिटी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज्वाइन करके आपके शहर के कम्युनिटी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है सक्षम नाम का, जिसमें हम अभिभावकों को ये स्किल्स प्रदान करते हैं जिससे कि वो अपने बच्चों के साथ खुद काम कर सकते हैं, थेरेपी के अलावा, जिससे कि उनका ज़्यादा विकास हो सके। और हम ऑनलाइन वेबिनार्स या इन पर्सन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते रहते हैं। और इस प्रकार के यूट्यूब लाइव भी हम करते हैं, जिसमें हम इस क्षेत्र में काम करने जो वाले जो सराहनीय लोग हैं, जो बहुत मोटिवेटिंग लोग हैं, उन लोगों को इस मंच पे लाते हैं, ताकि हम उनकी कहानी से प्रेरित हो और ये समझ सके कि उन्होंने क्या किया है और कैसे इस सफर को तय किया है। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज संगीता जी जुड़ी हुई हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा संगीता जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि संगीता जी, जो आज का हमारा विषय है उसके लिए बिल्कुल युक्त जो है वो संगीता जी हैं। और आज का हमारा ये एक विषय है जो एक सवाल होता है हर अभिभावक के मन में, और कभी ना कभी ये जरूर आता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। और खास तौर पे ये सवाल उन अभिभावकों के मन में आता है जिनके बच्चों के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम इस डर या चिंता की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे कि हम आज से क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर, ज्यादा अर्थपूर्ण और ज्यादा स्वतंत्र हो सके। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ है एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने इस सवाल को सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने ये सोचा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक मिशन बना डाला इसी कार्य के लिए।
हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता चक्रपाणी जी, जो को फाउंडर है टुगेदर फाउंडेशन और द टुगेदर कम्युनिटी की। पर वे केवल एक फाउंडर ही नहीं है, वो एक माँ भी है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें उनकी 2 बेटियां लक्ष्मी और जयंती ऑटिस्टिक हैं। तो उनकी ये जो पर्सनल जर्नी है या जो उनका ये सफर रहा है, उन इसमें भी एक बहुत ज़रूरी सवाल उनके मन में बार-बार आया था कि जो हमारे ऑटिस्टिक और न्यूरो डाइवर्जेंट एडल्ट्स होते हैं, उनके लिए अर्थपूर्ण, स्वतंत्रता पूर्वक और गरिमापूर्ण ज़िंदगी कैसे बनाया जा सकता है? और यही सवाल उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट और सपोर्टेड लिविंग के एरियाज़ में काम करने की दिशा में ले गया। पिछले 12 सालों से टुगेदर फाउंडेशन के जरिए वो ऑटिस्टिक और न्यूरो डाइवर्जेंट अडल्ट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और वर्क अपॉर्चुनिटीज बना रही हैं। मुंबई में उनका एक शेल्टर्ड वर्कशॉप है, जहां अडल्ट्स को वो अलग अलग कौशलता की ट्रेनिंग प्रदान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी जो संस्था है वो ये चाहती है कि ये जानकारी उन माता पिता तक भी पहुंच पाए जिनकी आर्थिक स्तर इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी जो चीजें हैं इनकी, वो फ्रीली डाउनलोडेबल है और ओपनली अवेलेबल है। लेकिन संगीता जी की जर्नी यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक द टुगेदर कम्युनिटी भी क्रिएट की है, जो एक बहुत अलग किस्म की और बहुत ही दिलचस्प कम्युनिटी है, जो होसुर में स्थित है। होसुर एक शहर है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में है और बंगलुरु के बिल्कुल पास है, जहाँ पर एक फुल्ली ऑपरेशनल रेजिडेंशियल कम्युनिटी बनाई है उन्होंने स्पेशल नीड्स के लिए। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर जो हमारे स्पेशल अडल्ट्स हैं वो तो अलग रहते हैं अपने घरों में, पर अगर चाहें तो उनके परिवार वाले भी उसी कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन अलग घरों में। तो ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जहां स्वतंत्रता, गरिमा और अर्थपूर्ण जो उनकी जिंदगी है और कम्युनिटी लिविंग है वो प्रदान की जाती है, और उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है। तो संगीता जी, नई दिशा के इस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ अपनी पर्सनल जर्नी और ये जो बहुत ज़रूरी काम आप कर रहे हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि हम उस वक्त चल जाते हैं जहाँ पर आपको पहली बार पता चला कि आपकी बच्चियों को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है। तो उस वक्त आपकी क्या भावनाएं थी, और उस वक्त आपकी जो चिंताएं थी वो किस तरह की चिंताएं थी? So hi, namaste. Thank you so much कि I was invited to be a part of this program. And when Nayi Disha got in touch with me, उन्होंने पहले कहा कि आप अपने किताब के बारे में बात करो, जो आपने किताब लिखा है। So मैंने खुद उनको बताया that more than talking about my book, I think parents will be interested in hearing about the residential community more than the book, because all of us, हम सब parents, we all what do you call, uh, we have anxiety, worry, concern about our children at different points of time. उनका जो लाइफ के अलग अलग जो milestones है, उस पे we have successes, we have failures, we have challenges, सब कुछ, and it's not only about what happens after I'm gone. वो तो है ही कि चलो when I am not there, ये जो मैं एक I'm like a Brahma in my child's life. Parents, उनका role is so powerful in the child's life. हम जहां भी हैं, कैसे भी हैं, I remember there is this mother called Babita Raja, who is in Mumbai. I'm taking the liberty of speaking about her. She's one of the most cheerful and positive people I have ever met in my life. And she is a parent and a professional. और उन्होंने एक बात कहा था मुझे, जो मैं बिल्कुल समझ सकती थी कि वो क्या बता रही थी उसमें. शी सेड इट इन ओनली वन सेंटेंस. वी वर टॉकिंग अबाउट, हम कुछ ट्रेन के सफर के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेन में जाते वक्त समथिंग सीट मिला नहीं मिला समथिंग. सो अदर टाइम बबीता सेड, देखो संगीता, इफ इट्स ओनली मी एंड माय सन, ओके, सीट है, सीट नहीं है, जगह है, जगह नहीं है,
चाहे कुछ भी हो, हम दोनों साथ में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. My God, what a statement. And I remember I was like so awestruck, because that is exactly how I feel. If it's just me and my daughters, na, we can do anything together, the three of us. कहीं भी सफर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, कभी गुस्सा आता है, कभी रोते हैं साथ में, कभी वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर सैड, समटाइम्स वी आर एंग्री, बट वी आर टुगेदर. और वो जो बीच का वो बॉन्ड है ना, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स. कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी तकलीफ हो. बट देन व्हाट हैपेंस, वी थिंक ओके व्हेन आई एम नॉट देयर, उनके जीवन में ये ऐसा एक व्यक्ति कहां से आएगा, बताओ आप. इवन अ ब्रदर और अ सिस्टर कैन नॉट फुलफिल दैट रोल, an uncle, aunt, anybody. So that's when we have to have faith in our child. इतना भी अपने बच्चे में इतना भी हिम्मत मत हारो उसमें, कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा हमारे बिना. वो हिम्मत रखो कि हाँ, ये भी एक इंसान है, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, उसके इन हिज ओन राइट, और ही विल लिव हिज लाइफ विदाउट मी, एंड ही विल कंप्लीट हिज लाइफ ऑन अर्थ. ये जो जीवन है, जो भगवान का देन है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल ऑफ अस, वेदर वी हैव ऑटिज्म और वी डोंट हैव ऑटिज्म. द गिफ्ट इज द सेम. धरती वही है, आसमान वही है. तो वो भी जिएगा, और वो भी अपना जीवन यहाँ पे एंड तक खत्म करेगा हमारी तरह, हमारे बिना. We have to have that faith. We have to be very, very strong and very positive. First thing, I have seen mothers carrying their child who has multiple disabilities, getting into bus and auto and walking and coming to Ummi Child Development Center in Mumbai for their early intervention program. मैं भी वहां पे जाती थी मेरी डॉटर्स को लेके आफ्टर डायग्नोसिस, और बिल्कुल टायर्ड, द डे हैज नॉट इवन बिगन. By the time the mother lands up at Umid, she is already tired. Because सुबह उठ के चपाती बना के सब कुछ करके डब्बा बना के सब करके वो आके पहुंची है. But she will enter Umid with a smile. And they have all progressed in life. बच्चे बड़े हुए हैं, सब कर रहे, सब आगे बढ़े हैं. So we are very strong. Parents are very strong. So that's the first thing. And that is why I wanted to talk about residential living and not about my book. So over to you now. थैंक यू मैम, आपने बहुत खूबसूरत दो चीजें बताई है जिनको एक्चुअली रिलेट भी कर सकते हैं कि पेरेंट्स उनके बच्चों की जिंदगी में ब्रह्मा तो जरूर है, बट फिर भी अपने बच्चों पे आप भरोसा रखिए कि वो खुद भी बहुत, उनमें भी बहुत पोटेंशियल है, उनसे भी बहुत हो सकता है. ये बहुत खूबसूरत बात थी. दूसरी बात, आप ही के जो आपने उत्तर दिया उसी से मैं सवाल पूछूंगी कि ये बहुत सारे पेरेंट्स की इनिशियल जर्नी यही होती है कि आप थेरेपी से थेरेपी एक चक्कर मार रहे होते हैं, और उस वक्त ये ख्याल भी नहीं आता है कि आगे का सोचना है. जैसे मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बाद क्या, बट उनको इंडिपेंडेंट बनाने की दिशा में या उनको किसी तरह से स्किल डेवलप करने की दिशा में कई पेरेंट्स सोच भी नहीं पाते हैं. बट आपने, जहां तक मुझे पता है, बहुत पहले से ये सोचना शुरू कर दिया था. और ये क्या था, व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट जहां आप इसके बारे में सोचने लगे और आपको ये लगा कि ये जो आपका कम्युनिटी, आई मीन लिविंग स्पेस तो है, बट उससे पहले जो वर्कशॉप है जहाँ पर उनका स्किल के ऊपर भी काम हो रहा है. एंड आई रिमेम्बर कि वहां भी मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें कि आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि वो काम करेंगे बट प्रोफेशनली काम करेंगे. यू आर इवन क्लॉकिंग इन आवर्स वहां पर, उनका चेक इन टाइम, वो डिसिप्लिन जो है. आप ये नहीं बोल रहे हैं कि ये स्पेशल नीड्स है तो वो कैसे भी काम कर सकते हैं. यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. तो ये कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये भी सोचना चाहिए मेरे बच्चों के बारे में, and what you led you to that work, and why do you think that importance of professionalism, we should stress on that also when you are conducting such things for special needs children also?
So, I mean, I got into this because, I mean, I've talked about this so many times that my daughters, Lakshmi and Jayanti, were autistic. They moved out of school when they were only 9 years old. 9 years is not the age to stop your journey of learning, right? 9 years, life has not even started. You're still almost a baby, you know. तो तब मुझे सोचना पड़ा कि अब क्या करें, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं इन दोनों बच्चों के साथ, हुआ सो फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी चिल्ड्रन, you know. And I started thinking, and और पता नहीं, मुझे लगा जैसे मेरे सामने कुछ भी नहीं है. I felt as if I don't know, everything was empty, जैसे मैं एक खाली जमीन पे हूँ और एक छोटा सा एक पत्ता भी नहीं है वो जमीन पे. That day, that's how I feel. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती. I can never forget that day. Then चलो ओके, आई वेंट होम, उनसे बैठ के बात कर रही थी. देन आई सेड ओके, अभी सवाल पूछ ही रही हूँ कि अभी आगे क्या, तो मैं क्यों नहीं थोड़ा और भी सवाल पूछ लेती हूँ. लेट मी आस्क अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. और फिर मैंने 2-3 शीट ऑफ पेपर लिया, एंड ऑन वन पेपर आई रोट फ्रॉम 9 to 15 years. Then on one paper I wrote, okay, from 15 to 21 years. Then on a third sheet I wrote from 21 to 40. And then on the fourth sheet I said 40 plus. And then I asked myself, you fill in the blanks now. So I said, okay, so under 9 to 15, I said, what do I want for them? What do anybody want at that age? You want your child to learn. 9 to 15 क्या चाहिए? सीखो. सीखो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, ताकि आप वापस कुछ दो दुनिया को. Right? So my dreams were very big. It was not only that my children should learn, I also want my children to give something back to this world, to leave a mark. कुछ छोड़ के जाओ, एक service, something, you know. So I said they should learn, they should grow, and they should give back. So that I wrote under 9 to 15. Then I came to 15 to 21. I said 15 to 21, they should be growing up. Like it should be like college की तरह, equal to college. लेकिन वो कहाँ से लाऊं वो कॉलेज उनके लिए, जो तीसरी स्टैंडर्ड तक नहीं आ पाए, उनके लिए मैं कॉलेज का सपना कैसे देखूं. सो आई रोट लाइक कॉलेज, लाइक अ कॉलेज, वो लिखा मैंने. देन 21 to 40 में आई सेड they should move out of their mother's house, because that is what happens with most children. माँ के घर से एक 23, 24, 25 तक अपना बाहर का कदम रखना चालू करते हैं ना, खुद का घर लेते हैं, या पीजी में जाके रहते हैं, या हॉस्टल में जाके रहते हैं, किधर जाके काम करते हैं, बट दे स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट. एंड 40 प्लस आई रोट, आई विल नॉट बी देयर. So under 40 plus I wrote without amma. So what happens? तो ऐसे मैंने लिखा. And then I started. I said then okay, I have to make a teaching program. And then when बहुत पेरेंट्स के साथ मैंने बात किया और मुझे समझ में आया, मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ही हूँ. फिर मुझे पता चला कि बाहर there are thousands of parents, not even hundreds. There are thousands and thousands of parents going through the same thing. You know, where school ends at one point. Yeah, you know what happens? Somehow they cross school and they get the 10th standard certificate भी हाथ में ले लेते हैं, एक 12th भी हाथ में, और कितना मेहनत करते हैं ये बच्चे, ओ माय गॉड. और उनके पेरेंट्स उनके साथ मेहनत करते हैं, and they sweat it out and they get the 12th standard certificate in the hand. And then they struggle for a job, you know. And then they struggle for admission outside. That is the part which breaks my heart. इतना कोशिश करने के बाद वापस सवाल पूछ रहे कि अब मैं क्या करूं. So we have to create skilling opportunities, multiple skilling opportunities. आपने अभी पूछा कि आप
बायोमेट्रिक्स क्यों रखते हो, आप टाइमिंग्स क्यों देखते हो? अभी आफ्टर ऑल स्टाइपेंड ही तो देते हैं हम. We give a stipend of 1,500 rupees. We are not able to pay salaries to our adults because हमारा फाउंडेशन चलाने में जो खर्चा होता है उसमें पैसा नहीं बचता है स्टाइपेंड के लिए. वो स्टाइपेंड भी डोनेशन से हम लेते हैं. Plus we have fees also, which I personally find it very sad that we have to charge fees. We charge fees, but only one thing good is at least we give subsidy for needy families. So we have families paying 500 rupees and we have families paying 4,000 rupees. So we have never refused a family because you cannot pay fees. But something we ask them to pay because how will we manage? We have 12 teachers. Where will the salaries come from? We have qualified people who are working in the center, who are supporting the adults, giving a professional environment. Second thing is, you have to give dignity and equality in the workplace. That creates a very positive atmosphere and also it sets the blueprint for the future. जितना हम अपने आप को हम ताकतवर बनाएंगे, सिस्टम्स को जगह में रखेंगे, उतना फ्यूचर भी इट विल बी स्ट्रॉन्ग. So you come to the workplace, you have to be neatly dressed, you have to wear full length trousers, hair should be neatly combed, right? You can't wear cut off, ye wo sab, you can't do fancy jewelry, big earrings and all, you can't do. To come dress the way you go to work, you have to come on time. There's a biometric system. We have all those things in place. And we also ask, we track their productivity. How many products did you make? What is the area that you're doing well at? See, all these things, no, it adds to the overall development of an individual. It's very important. Then we give feedback to parents. We send videos to parents of what is happening. We give a report at the end of the year. वो report में we actually give information that in an hour this person makes so many bags. In an hour this person is able to make so many data entries. In 2 hours they are able to do this. These are the areas in which they have leadership qualities. We give it every year and I always tell parents, please don't think that Together Foundation is the end of your world. कल आपका सपना बड़ा होगा. आप बोलेंगे चलो मैं अपने बेटे के लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, चलो मैं अपनी एरिया में उसके लिए एक काम ढूंढ के देती हूँ. सो ये जो रिपोर्ट्स हमने दिया है, they will be very useful because these reports are like a biodata. They are made so professionally that any person reading it knows, okay, this person can do all this. इस एरिया में मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ. Because Together Foundation, we don't do placements. That is one area we have not got into because we are not able to sustain it. See, उधर जाने के बाद वहां पे माहौल क्या होगा, कैसे होगा, we have not been able to crack that. We are not fully comfortable with our system for that. So we have not got into placements. But we always tell parents, if you find a place that you are happy with, अगर आपको लगा कि ये जगह में मेरा बेटा कर सकता है, we will help you. We will come, we will sensitize the team, we will give a plan. आपके बेटे, now one of our students has started his own business. We are so happy for him. He has started his own chocolate making business. His name is Mosam. He has begun and he is manufacturing from home and he is selling. So on Independence Day, this time he came and made a presentation on his business model. We were so happy for him, you know. So this is the whole concept, to give equality and dignity. It is not a favor. It is the birthright. It's like the constitutional right, बोलते हैं ना. स्कूल में पढ़ाते हैं ना, right to freedom, right to something है ना, या अभी याद नहीं है, 53 years old, so I'm not able to remember स्कूल में क्या पढ़ाया. But you remember हम सब स्कूल में वो बुक का पहला पेज में वो आता था, नोटबुक में, सब टेक्स्ट बुक में,
constitutional, abhi, I don't know now whether they do all that, right to freedom, right to this, right to that. Usme I want to add a line, right to equality for neurodivergent people, right to equality and equal opportunities for neurodivergent people should be added everywhere across the world, in every institution. It is not a favor, हम कुछ महान काम नहीं कर रहे, ये उनका हक है. थैंक यू सो मच मैम। भले आपको राइट्स याद ना हो बट आपके कार्य से वो सारी चीजें आप अप्लाई कर रही हैं। खासतौर पे जो गरिमा का शब्द इस्तेमाल हुआ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हम केवल कुछ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो गरिमा रखने के लिए, उनको स्वतंत्र बनाने के तौर पे और उनको प्रोफेशनल्स बनाने के तौर पे काम कर रहे हैं। जो आपने बताया कि वो आके अपना बिजनेस मॉड्यूल भी प्रेजेंट कर लिया, ना कि सिर्फ काम किया, तो वो दिखाता है कि किस तरह के काम होता है। मैं इस सेक्शन का एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हर जगह तो टुगेदर आपका, आई मीन, आपका फाउंडेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम आपकी तरफ से आप पेरेंट्स को क्या उपदेश देंगे? क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो पेरेंट्स बहुत सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज से भी आते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि कौन से स्किल्स पे उन्होंने काम करना चाहिए? और हमको ये भी सवाल बहुत बार आता है, मैं खुद जब पेरेंट ट्रेनिंग करती हूँ, कि मैं मेरे बच्चों में स्किल्स आइडेंटिफाई कैसे करूँ? तो अगर आप बता पाए, क्योंकि आपने उसको इस लेवल पे लेके गए हैं कि उसको एक बायोडेटा में भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब स्किल्स हैं इस बच्चे में, तो पेरेंट्स कैसे कि ये काम कर सकते हैं अगर उनको आपके जैसे फाउंडेशन की सहायता नहीं मिल रही है? So starting something takes a lot of work, it's a lot of hard work. And if you want to run it as a place that teaches professional work ethics, then बहुत उसमें effort बहुत है, systems डालना, teachers को train करना. But when a group of parents come together, now, they can achieve anything. If even two mothers decide कि मुझे कुछ, हमें कुछ करना है, तो कर सकते हैं. Okay. Now, how do you start? Where do you start from? मैं क्या करूं? Suppose, let's say, I remember there was a group of parents, mothers who came from Raipur or something like that. Once, they said, where, क्या? I mean, everything looks so, this one to them, क्या करें? पास में कोई नहीं है, special educators नहीं है, किनको पूछे, क्या करें? So, what we do at the foundation is, we mentor other organizations in starting their own vocational center. Or, but one thing I want to say is we take it very seriously. Like, for example, we don't do it in 1 or 2 meetings. We have a proper year-long contract. It's like an MOU, but there are no commercials. We don't charge anything. There is no exchange of funds over here. There is only exchange of serious knowledge sharing and serious commitment, because our teachers put lot of effort, together foundation ke jo teachers hai. So what we do is we have a year long process by which we work with that group, and we start from the beginning. Where are you? How old are your children? आपके एरिया में क्या क्या आपको मिलता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपका बजट क्या है. See, there are groups who say we don't have any money. Please don't give us expensive ideas. Don't tell me make toran, make something handmade paper. Banao, we don't have money, but we want to do something. But if you are determined, you will do it. Let me tell you. So we start from scratch. चलो आपके पास क्या है, वो बताओ, आप कौन सी एरिया में हो, आप कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने मदर्स हैं, किस किस का हेल्प है आपके पास, आपका बजट क्या है, वहां पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है. And then we teach them and help them to make a plan. Any vocational unit has to have a business plan. You cannot say that I am only doing vocational training. No, you have to sell what you are making. So any vocational center has to be divided into two parts.
मैन्युफैक्चरिंग एंड टीचिंग. सो यू शुड हैव मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स जो बिकेगा, एंड यू शुड हैव टीचिंग प्रोग्राम्स वो जो नहीं बिकेगा. So that requires lot of analysis. Then next up उसको आप कैसे सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे, क्या प्रोसेस है, एक विजुअल स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, सिस्टमैटिकली कैसे सिखाते हैं, वो सब हम सिखा के उनको डेमो बना, एक डेमो हम बनाएंगे तो 4 डेमो उनको बना के हमें देना पड़ेगा. We don't do the work for them. We help them to do. So we show a sample and we say you make and show us now. Every month we meet. और अगर वो इन पर्सन आना चाहते हैं तो भी हम उनको बुलाते हैं. वो एक दिन को हम अपना पूरा टाइम टेबल को हम देते हैं, और फिर उन्हीं के लिए वो दिन जो भी उनको दिखाना है. एक दो टीचर्स ही हम छोड़ते हैं अडल्ट, हमारे अडल्ट्स को सपोर्ट करने के लिए. सारे टीचर्स इनके इसमें लग जाते हैं क्योंकि इतने दूर से आए हैं ना. तो सब कुछ उस दिन हम we try to give as many demos, whatever possible, material, whatever. So it's a year-long program, and we feel very happy when they say, "आज हम इस महीने हमने पेपर बैग्स बेचना स्टार्ट कर दिया है, या हमने ये बनाना स्टार्ट कर दिया है." और नॉट ओनली दैट, हम भी उनसे सीखते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़े ज्ञानी हैं और किसी को और कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमें पता है. नो, ऐसा नहीं है. It's a knowledge sharing. Many times they do something and we take an idea from them. But it's a very structured process by which we go on sharing our experiences. And we ask for a feedback in the middle of the year. कि आपको मदद मिला क्या, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, कैसे लगा. Then I also take sessions for their teachers online. मैं अपने experiences शेयर करती हूँ उनके साथ. कभी कभी जब बहुत ही हिम्मत हार जाते हैं तो फिर मेरे बोलते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मेरे टीचर्स बोलते हैं संगीता आप आ जाओ. फिर मैं एक सेशन में आके उनको बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, तो आपको करना पड़ेगा. यू कैन डू दिस, ये कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो. फिर मैं अपनी दुख की कहानी में सुनाती हूँ उनको कि मुझे ये सब तकलीफ हुआ था. देन दे ट्राई अगेन. सो इट्स अ वेरी satisfying process. So you can do anywhere, wherever across India, you can find an opportunity wherever you are and start from there. और आप और आपके बच्चे साथ साथ वापस एक बार बड़े होंगे. It's a growing up all over again for you and your child. थैंक यू मैम, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और ये कि अगर पेरेंट्स चाहे, दो तीन पेरेंट्स भी आकर जहां भी आप हो आप कुछ कर सकते हो। और Definitely they can write to us, WhatsApp us, then we can work with them. थैंक यू मैम। तो हम लोग आपको नई दिशा के इसमें सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम जरूर शेयर करेंगे मैम का जो भी Yes, yes. कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उनके साथ जुड़िए, बट ये जानिए कि ये बहुत सीरियस बिजनेस है। आपको उसके जो भी है वो सब फॉलो करना पड़ेगा, और मैम साथ में रहेंगी आपको हैंड होल्ड करने के लिए। थैंक यू मैम। अब हम अलग सेक्शन पे आते हैं जो आपका टुगेदर कम्युनिटी है, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग और यूनिक लगा। जहाँ तक हमारी बात हुई है उतने में मुझे लगा है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत रिसर्च करके, बहुत उसको पूरा उसका जो बेस है वो ये करके बिठा के ही आप करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये कम्युनिटी के बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपने बहुत अलग कम्युनिटीज भी विजिट की होंगी या देखा होगा कि भारत भर में इस दिशा में क्या काम हो रहा है। तो जब आप वहां गई थी, वहां आपने क्या देखा, और तो क्या कौन सी चीजें आपने यहाँ लाई, और कौन सी चीजें आपको लगी कि वहां पर नहीं है, यू थॉट दैट दीज थिंग्स कुड बी डन बेटर, and which you have now brought into your community. So my question is, what are the things that you found inspirational, which you've brought into the together community, and what were some of the things that you thought were missing and you needed to, even bring this to make it like a holistic kind of a community system? So it's like this. Let me be very frank here. I have visited many residential communities in India. I have never gone outside India. Whatever I have seen within India. And everybody has opened their doors to us. Nobody has ever said, नहीं हम नहीं दिखाएंगे, कल आ जाओ, परसों आ जाओ. People have been very helpful to us.
and they've shared their experiences. So it's not a question of what you find missing somewhere else. Let me tell you, it's a lot of effort to run a community 24 by 7 for vulnerable people. It's a lot of effort. Am I audible? Can you hear me? Yeah. So, so it's not the question of what you find missing. It's the question of what is the model you have in mind and what is it that you want to do. Now, I remember I told you I made those sheets of paper 9 to 15, 15 to 21. So, on that 15 to 21 bracket, I had said growing up. And 21 bracket, I had said they have to move out, they have to leave. So then I started working on that. If they have to leave my house at the age of 21, 22, if they have to start living on their own, then what? I mean, to me, it was like, my God, वो हो भी सकता है क्या? इतना बड़ा सपना मैं कर सकती हूँ? कहाँ जाएंगे? क्या? कैसे? कुछ समझ में नहीं आया. I had never seen a residential community. क्या होता है? Nothing. So I started visiting places. And I made my husband, Chakrapani, who we all call CP, I made him come with me. And he was not at all happy. He said, 9 साल के बच्चे हैं, पागल हो गया और कुछ नहीं है आपके और जो थोड़ा बहुत शांति बचा है जीवन में उसको भी आप खराब कर रहे हो मुझे ये सब देखने के लिए. And he was emotionally not ready because to visit a residential means you are seeing adults and you are seeing adults, some of whose parents are not there, they're no more. So he said, Sangeetha, don't, whatever mental peace I have, don't spoil it, leave it, you know. So then I had to really persuade him and tell him that unless we see, how will we learn? How will we know? And he came with me. See, because I was very clear कि till then founding the Together Foundation को create करना, वो सब करना मैंने कर दिया था. And I got help from lot of people. We have at the foundation at Bombay, so many people joined us. We have a board of trustees of very eminent people who are there to guide the organization. So, but community is something which I was very clear that CP had to help me. See, because he is a person with a banking background, he has a background in financial planning. So I needed somebody very, very strong to guide me. So special education is not enough. When you want to create a residential community, me having knowledge of special education, autism, all that is not enough. You need somebody to guide you and mentor you for the entire business plan. How will it run? You also have to be clear, is it a not-for-profit residential center or is it a paid residential center where only paying families will join? If you are running a not-for-profit residential center, it's a completely different model, completely, which will offer very, very limited comfort plan, the standard of living, everything will be very, very basic to make it economically viable to be able to take in non-affording families. You should see the moment you say it's not for profit, you should not turn away somebody who doesn't have money. So I could not do that. That I was not able to conceive that. So I wanted a place where my daughters will live and I wanted a certain quality of living for them, at least to match what we have. Okay. And CP, and I needed CP's help. So I told him, you have to stand with me. अभी यहाँ तक मैंने कर दिया, अभी आगे you have to walk with me. So we went, we visited residential centers, we studied different models, and we kept coming up with what we wanted. We kept thinking. So we had 4 or 5 things. कि it should not be a separate project. कहीं पे सिर्फ अकेला एक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए ताकि लोगों का चहल पहल होना चाहिए.
हमारी दुनिया से हमने बाहर जाकर तो बहुत सारे लोग होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, वो सब मेरा सपना था. सो वो एक था. Another thing is we wanted the involvement of parents. See, because what happens, एक मिनट आप भूल जाओ कि मैं एक पेरेंट हूं, that you think of me only as somebody who's a professional in this field. You forget that I'm mother to Lakshmi and Jayati. I start a residential. Okay? Out of my passion for the field, मैं एक रेसिडेंशियल प्लान बना के मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके, चलाती हूँ, प्रोफेशनल्स को हायर करती हूँ, वो सब करती हूँ, और हम प्लान करके चलाते. Now, what happens when I grow older? What happens when I am not able to manage anymore? Who will run the show? Because the adults will still be there. See, the lifespan of a residential community has to be at least 80 years, because they're all joining at different ages, no? Starting from 15 say leke, they start, some join even earlier than that, 11 and all that, okay? So parents क्यों करते हैं ये सब? अपना घर बार सब छोड़ के इधर क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे बिकॉज यू आर गिविंग द सिक्योरिटी की डोंट वरी, आफ्टर यू ऑल्सो योर चाइल्ड विल बी कंफर्टेबल, right? So suppose I don't have parents and it's only me and professionals. Professionals, you cannot tie them and keep, no? They will come, they will serve, then they may go somewhere else, they may relocate. Then you have to get a new batch of people, you have to train them. So उसमें adults का जीवन को हम ये नहीं कर सकते हैं ना, डिस्टर्ब नहीं कर सकते. उनका जीवन में वो स्टेबिलिटी होना चाहिए. वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगा? It will come from a continuity of parents. So that's how we created the Together community, where the continuity is provided by parents, but day-to-day management is done by us, by professionals, by Together Foundation, and we also have partnered with Vedanta Senior Living. They are a senior living provider company. So they have a lot of expertise in giving those kind of services. जिसमें हमारा expertise नहीं है. See, I can design programs, I can train teachers, I can help them to intervention plans, all of that. If you ask me to run a food and beverage section, if you ask me to run the security, housekeeping, primary health center, I don't have the learning, I don't have the knowledge. So we needed professionals who would be able to manage that. So we tied up with them that they will provide all those things. And Together Foundation will provide this. And behind all this is the parents. So when, let's say, I take admission for my daughter in Together Community, I have to buy a house for myself. That's the model. I buy a house for myself, I stay in my house. Automatically, along with it, I get a small apartment for my daughter in the same campus. Okay, so I'll show it to you like this. See, this is the campus. Okay, यहाँ पे पेरेंट्स के घर है, इधर इन दिस सेक्शन. ओके, ये पूरा सेक्शन अडल्ट्स का है. यहाँ पे उनके छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं बिल्डिंग्स के अंदर, नॉट अलग अलग. ओके, एंड कैफेटेरिया है वहां पे, ऑल द ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट हैपेंस हियर. Then across the lane there is a skill center where they go to work, right? And then there is a park, and then we have a community hall where there is social engagement, all of that. So this section is for the adults. This is where the parents live, and all of it is one place. So what happens? ये जो amenities है, facilities है, it is common to parents. So this cafeteria, the parents will also have their meals there. वो जो जिम है वो भी पेरेंट्स यूज करेंगे. स्किल सेंटर में आके वॉलंटियर कर सकते हैं. हमारा एक छोटा सा वेरी ब्यूटीफुल जो क्यूट साई टेम्पल है,
वो जो कार्टून कॉमिक में सब दिखाते हैं ना, वो छोटा सा मंदिर ऐसा वाला है. इट्स वेरी क्यूट. इट्स एन ओपन टेम्पल फ्रॉम ऑल साइड्स. So we can see it anytime. We can see Sai Baba anytime. Day and night it is open. So all this is common. So the whole concept is parents move in, the adult moves in. And adult starts, it cannot happen overnight. ना अभी मैंने एडमिशन लिया, मैं आ गई, तो मैं अचानक लक्ष्मी और जयंती चलो आप जाके अपनी अपार्टमेंट में रहो, मैं जाके मेरे विला में रहती हूँ, टाटा बाय बाय, ऐसा तो नहीं हो सकता. So there is a transition. So we help them with the transition and they start living in the apartment slowly over a period of time. Parents help कर करके slowly parents start withdrawing. And the caregivers, the direct, what we call the direct service providers, they continue supporting and the parents start moving towards the villa. And they meet their parents 10 times a day. When you go for a walk, your parent is also coming out for a walk. When you go to the temple, when you go for your breakfast or lunch or dinner or whatever, all of those things. So that's how we created the model so that professionals may come and go. But when one set of parents pass away, another set of parents will always be there who will provide. So माँ बाप का साया जो बोलते हैं वो हमेशा रहेगा. So I may not be there for my daughter, but some mother will be there for my daughter. That much I'm sure of. That's the model of care. थैंक यू सो मच मैम. एंड मुझे कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है आपने लक्ष्मी और जयंती और उन सबके लिए जिनको इसकी जरूरत है. एक सवाल मेरा था, आपने ट्रांजिशन की बात की. रियलिस्टिकली जब ट्रांजिशन होता है किससे डील करना ज्यादा मुश्किल है, बट ये जो अडल्ट हैं या माता पिता से? क्योंकि कई बार हमारा अनुभव होता है कि माता पिता भी वो एक बहुत प्रोटेक्टिव मोड में होते हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू बीन देयर चिल्ड्रन ऑफ. और जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि 20 बार वो मिलेंगे अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स फिर से वो प्रोटेक्टिव मोड में तो नहीं चले जाते हैं? See, we also have to trust the parents. See, it's a gradual process. It's not easy for any parent. See, या तो मॉडल ही अलग होना चाहिए. See, once you make a model like this, you have to accept the participation of parents. Or you should not have a parent wala model. There are other models, you know, right? There are models where parents are not a part of the picture. They come, they see the project, they take admission and they go. And then कभी कभी आके मिलते हैं, जब भी हॉलीडेज में वॉट एवर मिलते हैं, बाहर लेके जाते हैं, हॉलीडेज में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, छोड़ते हैं, चले जाते हैं. इट्स लाइक अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अभी ये मॉडल में हमने खुद पेरेंट्स को बुलाया है कि आपको आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है. अभी बुला लिया है उनको, तो उनके साथ भी हमें बहुत नम्रता से कंडक्ट करना चाहिए. We have to give them some space and some time. And we have a very elaborate transition program. Huge, huge, huge. It's a long process which starts many months before they join the community. Many months prior, we start the process. We have meetings, we have interaction, we show them the schedule, we tell them what's going on. All of that hota hai. Then just before joining, again we start. See, because all 40, it has a capacity for 40. Now, all 40 will not come at the same time. They are coming from all over the world. They all have different timelines. लेकिन this is very clear कि 2 साल के अंदर सबको आ जाना चाहिए. Nobody can take admission and say I'm coming after 5 years. फिर क्या होगा? खाली पड़ जाएगा. अगर किसी ने मुझे कहा होता कि टुगेदर कम्युनिटी है संगीता, अभी आओ या बाद में आओ, तो इमीडिएटली ऑर्डर से मैं अभी क्यों जाऊं? मेरा सब इधर बना बना है बॉम्बे में. अभी फिर भी I can continue like this for at least 10 more years, yeah, till I'm in my 60s.
सो ऐसे चलो मैं बुकिंग अमाउंट दे देती हूँ, घर रजिस्टर कर लेती हूँ, आई कम लेटर ऑन। बट वी दिस इज नॉट आवर मॉडल। हम चाहते हैं कि ये मॉडल पूरी तरह से जग जाए, अच्छी तरह से भर जाए, अच्छी तरह से हम चलाएं। बिकॉज क्रिएटिंग सिस्टम्स, लेट मी टेल यू, creating systems that will stand the test of time, बिकॉज ये पेरेंट्स भरोसा करके आए हैं कि जब मैं नहीं हूं, मेरा बच्चा का अच्छी तरह से देखभाल होगा। वो भरोसा के हम हमें, व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, वी हैव टू, उसको कायम, आई डोंट नो द कायम इज द राइट वर्ड, कायम रखना चाहिए। वी हैव टू स्टैंड ट्रू टू इट। सो द सिस्टम्स वी सेट अप, तो दैट इज व्हाट आई वर्क ऑन। Daily operations and all, we have a huge team. We have a huge team of people who work on daily operations. But I work more on creating the systems for everything, right from care, right from reporting, right to medical management, how to look at emergencies, urgent situations, emotional well-being. And given the fact that people with autism, for them, communication is an area of challenge, राइट। तो एक लड़का बाहर आता है सुबह घर से, उसके फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल है और वो साइकिलिंग कर रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, एवरीथिंग इज फाइन, ही इज स्माइलिंग, ही इज साइकिलिंग। बट ऑटिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ही इज स्माइलिंग एट दैट टाइम, it is not a reflective of what happened half an hour before that, and he is not going to tell me, Amma, I didn't eat properly today, I'm still hungry. He will not tell me that. Or he will not tell me I'm not feeling okay. Or he will not tell me, Amma, the person in my apartment, the person who's supporting me, he's not kind to me, Amma. He is saying something to me every day. वो सब वो स्माइल के साथ कनेक्टेड नहीं है फॉर एन ऑटिस्टिक पर्सन। सो यू कांट से अच्छा वो तो स्माइल, इज लुकिंग हैप्पी, ही इज फाइन। So you have to have a system which actually knows what happened through his day. You have to devise a system by which you know his wellness through the day. You're able to connect the dots of wellness. So that is not so simple when you're managing multiple people, staff, all of that. So those things take time. And parents are one part of this whole thing. So we have a lot of interaction. When they come, the parents, first 15-20 days, parents spend with their child in the apartment. जो उनके बच्चे का जो अपार्टमेंट है, उसमें वो ही, मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को, वो ही आपके प्राइमरी घर है आपकी फैमिली का। प्लीज गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। योर विला इज नॉट द प्राइमरी हाउस, योर अपार्टमेंट इज द प्राइमरी हाउस। अभी अमेज़न में पता है मैंने लक्ष्मी जयंती का एड्रेस ही डाल के रखा हुआ है होसूर के लिए, बिकॉज मुझे दे होसूर, पहली बात होसूर है ही नहीं सिटी में, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स, बैंगलोर से इट्स हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, दिस लॉट ऑफ कंट्री साइड, ओपन फील्ड्स, ब्यूटिफुल ग्रीनरी, एवरीथिंग। बट यू डोंट हैव ब्लिंकिट, स्विगी एंड ऑल, वो सबके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो अमेज़न के आने के लिए भी पता नहीं वो बैलगाड़ी में बैठ के आता होगा, भगवान जाने हाउ ही लैंड्स अप ओवर हियर। बैंगलोर में अगर 4 दिन लगता है तो यहाँ आने के लिए 10 दिन अमेज़न का डिलीवरी, तो पहले ही सोच के रखना पड़ता है, या यू ब्रिंग इट टू बैंगलोर एंड somebody from Bangalore who's coming brings it for you. So I gave Lakshmi Jayanti's address. I don't want to give my address. So when I go to Amazon, immediately to say Lakshmi Chakrapani, studio apartment number 1, Jayanti Chakrapani, studio apartment number 2.
तो उसमें से कोई एक को मैं चूज करूंगी, चलो यहाँ पे आप भेज दो, because they have registered their presence. We have come and we have started our life. It's so beautiful to know that it's Sangeetha Chakrapani, care of Lakshmi Chakrapani, as far as the address goes. That's such a beautiful thing to know. But one of the things that you touched upon, मैम, जो मुझे भी थोड़ा सा ये था कि जो हमारे ऑटिस्टिक ये है, ऑटिज्म वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इनमें से अधिकांश लोग वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर करते हैं भी बहुत सीमित होता है उनका इंटरेक्शन। तो ऐसे में जो आपके सपोर्ट स्टाफ है उनको आप कैसे ट्रेन करते हो? एक तो होता है जो आपने कहा कि उनका जो दिन का पूरा केयर है वो, बट कहीं ना कहीं जो मॉडल आप बता रहे हैं जहां पर आप गरिमा की देखभाल करते हैं, आप उनका इंडिपेंडेंस देखते हैं, तो उनका जो चॉइस है, उनका जो वॉइस है, तो उसके लिए भी तो आपने जरूर ख्याल रखा होगा। तो वो आप कैसे, हाउ डू यू इंश्योर दैट देयर वॉइस इज हर्ड एंड बाय द सपोर्ट स्टाफ एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन? Voice is heard. Our autistic people's voices are heard in very different ways. All their voices cannot be heard through a mic. Some of our autistic people, you put a mic, you can hear their voice. Many autistic people, you have to hear them through their behavior, through their conduct, through their how they're eating, to how they're walking. The observation should be, oh my God, he's walking strangely. That means his thighs have started rubbing. That kind of bariki you should have, right? So how do you train caregivers, tell me, who are new to disability, who have never experienced disability in their life? And even the professionals who come, they have not done this kind of care. So at the same time, this training is not like one medicine, कि मैंने क्रोसिन टैबलेट डाला 2-3 घंटे में फीवर चला गया. It's an ongoing process. You have to keep working on it, sensitizing, refreshing the mind, documenting, and documenting. So everything we've done, if you see, you will see it in folders, in files, and in records. Everything is recorded. So that when another team comes, let's say tomorrow another group of parents are managing this community and not me, they will not find it difficult. They will have to work hard. But I'm sure many parents have the capacity to work hard and not only me. They will find systems in place. They'll be able to pick it up and start. Having said that, let me also tell you, no system is fixed. So you cannot sit back and say, oh, I've created a beautiful system. There is no problem in the community. No, I can never say that. It will constantly evolve. And when there's a problem, immediately you have to say, okay, that means there is a gap here. And you have to fill that gap. So you have to have that sensitization, training, lot of conversations. That's one thing. Second thing is, how are you tracking the adult through his day? See, imagine for a moment, the mother and father are staying in the villa. After some years, 20 years, 30 years, parents also will not be there. They would have passed away. Right? When till parents are there, parents कभी नहीं छोड़ेंगे, खाना छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, बच्चे को नहीं छोड़ेंगे. कैसे भी कुछ भी करके आके देखेंगे खाया क्या, क्या सब ठीक है क्या, और देख के ही पता चलेगा कि he is not okay. But our system cannot depend on parents, is what I'm telling you. The staff training has to be as if parents are somewhere else and not here. They are in US or in Bangalore or Delhi or whatever. So I keep telling my staff, please, my teachers, please don't think parents are here. You forget that parents are there. And you should have that little bit of worry. That little bit of worry, see, all right. That thing should be there in us. We should see from those eyes. Not from, after all, his mother, father, they were here just 5 minutes ago.
and you carry on with your life. Then what will happen? Later on, your system will not be able to handle if you start banking on parents. So then you will ask, why parents? So you tell me, what is wrong, or rather, is it not the right of autistic people, if given a chance, that they should have family? गलत क्या है इसमें? See, my father is with me. That means there's something wrong with me if my father is with me. I feel so happy when I'm able to meet him, I'm able to talk to him. There's so many families who stay close by. Often when we look at retirement or when we go to some place, we say, चलो वहां पे घर ले लेते हैं क्योंकि वहां पे भाई है बहन है. So somebody is there. We always look for family, na? Then why not for our autistic adults? क्यों ना उनको वो access मिले? So number one, they have a right to have that companionship. Second thing is, the moment you have called parents to be a part of the model, you are accountable to them for what is happening with the child. You cannot say कि आपका घर अलग है, मैं आपके बच्चे को संभाल रही हूँ, चलो मैं हफ्ते में एक बार आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा कैसा है, या महीने में एक बार आपको बताऊंगी. सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन बिटवीन, अगर उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है या कुछ बहुत सी, देयर इज अ वेरी बिग deviation in his behavior, will the parent or not want to be informed? He is living right there. So the parent will say, I want to know how my child is. इसलिए तो मैं यहाँ रुकी हुई हूँ. अगर बताना नहीं था तो मैं आती क्यों यहाँ पे, विला में क्यों लेती, मैं कोई और मॉडल में चली जाती थी ना. Why have I chosen your model? I have chosen your model because I want to be close to my child, number one. Number two, I want to know how my child is as long as I'm alive. I want to have some idea कि वो कैसा है. So we are also accountable and we have to let them know how their child is doing. That's the second thing. And third thing is, between the professionals who are running the community, there has to be a transparency of communication. You have to ensure transparency of communication. So you have to be able to track the adults well-being. अभी एक मिनट सोचो, 40 adults है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई और कुछ कर रहा है, कोई आज काम पे गया है, कोई आज काम पे नहीं गया है, कोई अपसेट है, कोई किसी को बुखार है. So many things every day something will be happening, yes or no? Agar, not because they are autistic, even you and me, if we have to, somebody asks you or me, what have you done since 6 o'clock in the morning till now? Now it is, let's say, 7 or whatever it is. What have we done in these 12 to 13 hours? There have been many ups and downs, yes or no? Or was it only up like this? एक ही दिन में इतना सब कुछ हो जाता है. The only thing is, you and I are able to tell each other. You'll tell your sister, you'll tell somebody in your family. I'll call up my husband. I'll tell him, today I could not find towels in the house in the morning. I got so angry. Not even one towel. Then I called him up. He's gone to Bangalore. तो फिर मुझे एक सस्पिशन आ गया कि जरूर उन्होंने कुछ किया है. ऐसे कैसे सारे टॉवल गायब हो जाएंगे? So I called him up. I said, what is this, CP? I can't find one towel here. He said, no, no. I thought I will help you. He has opened one drawer under the bed. Under the bed. Can you believe? And stuffed all the towels over there. I was like, what's wrong with you, yeah? Towels को कौन बेड के नीचे रखेगा? This is a daily use item. ना? I said, मेरा आधा घंटा गया. I have to reach my workplace. I could not find the towels. लेकिन मैंने अपनी frustration को अच्छी तरह से बता दिया. He said, okay, you chill, you relax. Huh? Sorry. Put down. The same thing if it happens with Jayanti. What will she do?
विल शी शाउट एट या? वो पूरा फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर ही रहेगा कि मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला. सो यू हैव टू बी एबल टू सी देयर वेलनेस. और जब आप 40 adults को मैनेज कर रहे हो, उनका इंडिविजुअलिटी को कैसे मेंटेन करोगे आप? या गाय बैल की तरह आप उनको खाने के लिए लेके जाएंगे, चलो उधर घास पड़ा है सब जाओ, फिर सब उधर जाओ वहां काम करो, सब इधर आओ सब आराम करो, शाम का वक्त है सब वॉकिंग जाओ, फाइन. बट उनके इंडिविजुअल जीवन में क्या हुआ है, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? That is what I work on. Systems to ensure that they get care. सवाल तो बहुत है बट हमारे पास वक्त कम है, तो मैं एक सवाल या दो सवाल लूंगी। एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त के लिए अगर हम आपके अंदर का फाउंडर और स्पेशल एजुकेटर सबको बाहर रखे, सिर्फ एक माँ को देखे, और आप जब जयंती और लक्ष्मी को इस कम्युनिटी में देखती हैं, तो आपको सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है एज अ पेरेंट, एज अ मदर? See that not now. वो अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है. Actually, they have started living here. It's been around 4 months now, but they have not yet started tasting independence. उसका अभी अभी उसको चखना स्टार्ट नहीं किया है. अभी भी वो एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं. उधर जाओ, ये करो, उधर से उधर जाओ, वो करो, अभी इधर आ जाओ. All that is happening because it's all new now. Even for all the adults who come, they need lot of comfort because they've come to a new place. सब कुछ छोड़ के आए हैं. So they've not yet started actually tasting it. They're more of following. Even when we give choices, see, the whole system has to be choice driven wherever possible. You have to build in choices. So all of that we do. But if you ask me, Sangeeta, have they started living independently? I would say not yet. It's a process. Independence is when, for example, they will say, today I want to go to the shop. Verbal, non-verbal, whatever. I want to buy a packet of Maggie. Okay. Or today, let's say, I want to meet somebody. They start saying things, they start doing things which is out of the standard routine. Or they say, I don't want to do this. They start expressing themselves more. And when they start asserting themselves more. Right now, I would say that is not like fully. I feel that confidence fully nahi aaya hai. So that is our job. But that is in stages. Stage one is give comfort, give structure, give a lot of companionship, and make them strong. And then set them, let them start exploring, you know, for everybody. I'm not talking about my daughters, I'm talking about everyone. फाइनल क्वेश्चन मैम, आपने ये दोनों चीजें बहुत खूबसूरती से क्रिएट किया कि एक वर्कशॉप भी है, अब ये कम्युनिटी भी है, एक आपने किताब भी लिखी है, तो ये किताब लिखने के लिए उसके पीछे क्या प्रेरणा थी, और थोड़ी से हमको आपके किताब के बारे में भी बताइए। Kitab, the book happened because, what do you call? I used to write on Facebook. I used to write chotu chotu blogs. I used to write, but they were all real life experiences. वो experiences को many people said convert it into a book. But the surprising thing was it was so amazing that the book got released. The book was about our life, our journey, how to get the foundation, all of that. The book got released, can you believe, on the day the community got inaugurated? That I was really, really surprised. More than a community, it was the 21st of January or something, when the first house, when Lakshmi and Jayanti moved into their home, the project went live. And I was so surprised when they chose that date.
And I mean, now it's available only in English, the book. I'm hopeful that sometime in the future, but as I said, the those days were very difficult days. It was full of challenges. In fact, uh, your um, your colleague Muskan, who's been in touch with me from Nayi Disha, one of the questions she asked me when she called me up today, and she said that, Sangeeta, also tell us about what are the things that have gone wrong. Don't tell us only about what has gone right. Also tell us about what has gone wrong, you know. And she said, please make sure that you talk about it. And let me tell you, in a project of this kind, I don't know about, I'm talking about my experiences. Both my husband, Chakrapani CP, and I it's taken us more than 10 years. We started working on this project in 2014. Even before Together Foundation Mumbai, we started. It took us years. Then we tried in Bombay, वहाँ पे नहीं हुआ. Then we tried in Bangalore, वहाँ चालू भी हुआ, भूमि पूजा हुआ, फिर बंद हुआ. फिर वहां से हम यहाँ पे होसूर आए. फिर होसूर आने के बाद प्रोजेक्ट प्लान बनाने के बाद अप्रूवल नहीं मिला वो डिजाइन के लिए. फिर हमें पंचायत के पास जाके अप्रूव प्लान को चेंज करना पड़ा. फिर हमने वो प्लान को, द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द हाउस चेंज करके दूसरा डिजाइन बना. एंड फिर उसके बाद आई मीन, इन द सेंस दैट now if you see our community, it's a beautiful place. Okay, it's the studio block, there's a cafeteria, you have a service provider who looks after. There are two parks. We have two beautiful parks. There's an indoor gym, there's an outdoor gym, there's a skill center, there's a community hall. But the thing is that, if you look at if you look at the failure, if you ask me what is the failure, what is it you've not been successful in? One of the things we've not been successful in is we've not managed to put a gate around. Now, if you go to any typical building, you will see a wall around the entire building. वो अंदर, वो सर्किल के अंदर आपका पूरा घर, वॉट एवर बिल्डिंग जो भी रहेगा, वो हम नहीं कर पाए हैं. We have not been able to do it because we have realized it's a public road. वो जो पूरा रोड है बीच में, वो सारा पब्लिक रोड है. तो जहां हो सके, जहां जहां हम कर सकते हैं, वहां हम कंपाउंड वॉल डाल सकते हैं. लेकिन ऐसी बहुत जगहें हैं जहां पे कंपाउंड वॉल हम नहीं डाल सकते हैं, because it's a public road and there are other people who are living in that same gated community. तो उन सबको हम जाके हम पूछ रहे हैं, उन सबको हम निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज, वी हैव कम हियर विद स्पेशल एडल्ट्स, वी हैव कम हियर विद वल्नरेबल पीपल, प्लीज अलाउ अस टू पुट अ सिंपल गेट. यहाँ के जो लोग हैं सब आओ, सब जाओ, लेकिन एटलीस्ट इट विल प्रिवेंट आउटसाइडर्स फ्रॉम कमिंग इनसाइड. Huge stress point, very huge stress point. Abhi we are all working backward in all directions कि कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं. And have we been successful in that? Have we communicated it properly? Have parents understood कि हाँ यहाँ पे gate नहीं है? They have not. So today there are parents who feel कि नहीं, ये gate नहीं है करके हमें पता नहीं था. So it's very painful. Because I'm a parent myself. I have given the best part of my life to this project. No, I've not done a favor to anybody. ये मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है. मुझे ये करना था, मैंने किया है. I was passionate about starting a residential community. I had made up my mind. And even today, the project is already established, has gone live. 10 adults are staying over here, another 30 families will come. And this project will run. There is no doubt about it. But is it a smooth journey? Is it an easy journey? Are we able to, project chalu ho gaya, abhi chalo, be happy and move on? No, we're not able to do it. Every day brings its own challenges. But right at the beginning, I told you one thing.
that you cannot afford to lose your strength and your faith in yourself. In this journey, it is your own inner strength, it's your faith in yourself which will help you to achieve your goal. Because it's a big goal when we want to help our children become independent. And these children are people who have vulnerabilities. The journey is not easy. It will take time, it will take effort. कभी लगेगा कि बिल्कुल हाथ के अंदर आ रहा है, and then it will come out of your hands. It will slip out of your hands. Just when you think that it is there in your hands. We were going to start an intervention center in Hosur. So both CP and I used to go to Krishnagiri district every weekend to ask for space to start a free intervention center in Hosur. We got permission for it. Almost. We had made the plans, everything. सब करने के बाद last minute में that space was given to a hospital. Last minute. Plans were submitted, approved. They said, no, we are doing municipal hospital there. So then we didn't give up. We said, no, we have to offer services to Hosur. We have come here. We should do something for Hosur also. So in our own skill center, we have made it inclusive now at Hosur. And now a bus goes from here. From here, the bus goes, picks up the adults, come here, they train and they go. So I'm very confident that as a parent group, we will face these challenges. Now it is not only CP and me. Now we have 40 parents. We have Together Foundation. We have Vedanta Senior Living. So it's a massive project. So we have to stay strong and see it through. That we owe it to ourselves. We owe it to our children. Thank you so much, ma'am. I just don't want this conversation to end, but looking at the time, we have to. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और वो स्टोरी केवल सफलता की नहीं थी। आपने जो भी आपकी जो कमजोरियां थी, जहां जहां आपको मुश्किलें आई, आपने वो भी बहुत खुले दिल से हमारे साथ शेयर किया। ये बहुत ही प्रेरणादायक होगा हमारे लिए, हम सब के लिए, और हमारे जो अभिभावक जुड़े हैं। जो मैम ने कहा कि यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ एंड बिलीव, सेल्फ बिलीफ, and you just cannot let yourself down or let your children down because they, you are out to do something, or and dream big। जो आपने कहा कि जो भी आप सोचते हो बड़ा सोचो, आपके बच्चों की क्षमताओं में आप विश्वास रखो, अपनी क्षमता में आप विश्वास रखो, तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एंड फॉर मी पर्सनली इट वाज, I mean, I'm so thankful to Nayi Disha that I had a chance to meet you through this conversation, because I heard those words which appeal to me a lot: systems, documentation, processes, and open conversation in communication. And it was a pleasure, ma'am. Thank you so much. And I hope we can meet sometime too. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. Thank you to the entire Nayi Disha team.